कि हमें ऑप्टिकल मिनरोलॉजी रे on the basis of behavior of light within a mineral, all the mineral can be classified into two types. जितने भी मिनरल अच्छी they can be classified into two types. one कहते isotropic mineral और कौन anisotropic isotropic mineral और कौन anisotropic mineral. तो लाइट ट्रैवल करे कौन सी सब्सटेंस रे इट वाइब्रेट्स इन ऑल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन रे वाइब्रेट करे से अनुसार तार वाइब्रेशनल प्रॉपर्टी अनुसार तुम जते भी मिनरल अछि ताको दुटा डिवीजन करछ, गोटे आइसोट्रोपिक आ गोटे कोन अनिसोट्रोपिक. जदि लाइट टा मूव करछि कोन सी सब्सटेंस रे इफ इट वाइब्रेट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, जदि से सब डायरेक्शन को इक्वली वाइब्रेट करछि ताले इट इज आइसोट्रोपिक. So when light traveling through a mineral, it is vibrating equally in all directions. सब डायरेक्शन को इक्वल वाइब्रेट करछ, सब डायरेक्शन इक्वल वाइब्रेट करछ माने गोटे पार्टिकल अछि से सब डायरेक्शन को इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करिवो ड्यूरिंग प्रोपागेशन ऑफ द लाइट वेव. तो ता कोनते आइसोट्रोपिक मिनरल. जदि अनइक्वल वाइब्रेशन देखेला ताले सेटा हिजो अनाइसोट्रोपिक मिनरल कहि जो अनाइसोट्रोपिक मिनरल. सो आइसोट्रोपिक मिनरल ऑब्वियसली जोटा क्रिस्टलाइज करते आइसोमेट्रिक सिस्टम रे सेरा सब कोन आइसोट्रोपिक बिकॉज ऑफ देयर इक्वल डेवलपमेंट बाय इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन. तो एटी तुमर आइसोट्रोपिक मिनरल कोन आछे माने इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन आछे. ता सहित तुम जानछ आइसोट्रोपिक मिनरल गुरा आइसोमेट्रिक सिस्टम रे क्रिस्टलाइज करंती. तो आइसोमेट्रिक सिस्टम रे कैरेक्टरिस्टिक होची A1 = A2 = A3. दैट आल्सो इंप्लाइज द इक्वल वाइब्रेशन कंडीशन. सेटा भी इक्वल वाइब्रेशन कंडीशन को इंप्लाई करे. तो गोटे पार्टिकल रे जदि ट्रैवल करची यदि इक्वली वाइब्रेट करे सब डायरेक्शन रे तार वेव फ्रंट हिजबो कोन वेव फ्रंट हिजबो सर्कल, वेव सरफेस है स्फीयर. तो ये हमें वेव फ्रंट करछन जोटा 2D रे हम 3D रे ले वेव 3D रे वेव सरफेस है जोटा हबो स्फीयर जदी इक्वली सब डायरेक्शन वाइब्रेट करछ. तो जते भी आइसोमेट्रिक सिस्टम रे क्रिस्टल अछंती ते ऑल विल बी आइसोट्रोपिक. अदर देन आइसोट्रोपिक ऑल अदर मिनरल्स आर अनिसोट्रोपिक. ओनली आइसोमेट्रिक सिस्टम रे जो माने क्रिस्टलाइज करछन्ती से माने होछन्ती आइसोट्रोपिक, ऑल अदर्स आर अनिसोट्रोपिक. आ जेते भी मिनरल ले समस्त होछन्ती अनिसोट्रोपिक. सो अनिसोट्रोपिक मिनरल अनइक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ थाए. and that implies ki other than isometric system there is no such system which where all the axes are of equal length. जते जाले तुमरो गोटे अनइक्वल डायरेक्शन पाइबो कि तुमरो टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक all will be अनिसोट्रोपिक. तो अनिसोट्रोपिक मिनरल जेतु अनइक्वल वाइब्रेशन देखाय तारो वेव फ्रंट हे जो एलिप्स. आ वेव सरफेस है जो वेव सरफेस है जो का एलिप्सॉइड. सो अनइक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ रहला. तो ए सिस्टम रे क्रिस्टलाइज करछे टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक. माने गोटे आइसोट्रोपिक सब्सटेंस है तुम जे कोनोसी डायरेक्शन ने लाइट को एंटर करबा मिनरल भितरे से अनइक्वल वाइब्रेशन देख सॉरी इक्वल वाइब्रेशन देखियो. अनिसोट्रोपिक मिनरल ले तुम जे कोनोसी डायरेक्शन ने लाइट को एंटर करबा से अनइक्वल वाइब्रेशन देखियो बट एक्सेप्ट वन और टू डायरेक्शन. अनिसोट्रोपिक मिनरल सेटा एक्सेप्शन कि तुम सब जे कोनोसी डायरेक्शन ने लाइट एंटर करैले भी एमती गोटे कि दुटा डायरेक्शन अछि जो डायरेक्शन तुम लाइट एंटर करबो से इक्वल वाइब्रेशन देखियो और इट विल बिहेव लाइक आइसोट्रोपिक. राइट. सपोज कि एटा मोर ओटा अनिसोट्रोपिक मिनरल हला और मात्र लाइट एंटर करैली को डिफरेंट डायरेक्शन में एंटर करैली
तो जेकोसी डायरेक्शन लाइट एंटर करेले भी इट विल बिहेव लाइक अनिसोट्रोपिक एक्सेप्ट वन आर टू डायरेक्शन जोथरे कि इट विल बिहेव लाइक आइसोट्रोपिक। तो एमती आम डिफाइन कर परिबा कि गोटे मिनरल रो कोनोसी डायरेक्शन एतरे लाइट ट्रैवल करे। गोटे मिनरल मल्टीपल डायरेक्शन थाए तुमे एठी जति गोटे मिनरल चूज करछो यू कैन चूज मल्टीपल डायरेक्शन टू एंटर लाइट इनटू इट। जे कोनोसी डायरेक्शन तुमे लाइट आ भितरे एंटर करे पारे। जो डायरेक्शन लाइट एंटर करछो जति सेही डायरेक्शन लाइट आ इक्वली वाइब्रेट करि जाउची दैट डायरेक्शन कैन बी कॉल्ड एज ऑप्टिक एक्सिस डायरेक्शन। दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ऑप्टिक एक्सिस डायरेक्शन। So it was a term as tomorrow optic axis. So optic axis which it is a direction along which it is a direction in mineral along which light will vibrate equally in all direction. Light will vibrate equally in all direction. सब direction को light equally vibrate करिवो। यदि सब direction को equally light vibrate करिवो that means it will behave like isotropic. It will behave like isotropic. Now, isotropic mineral जदि गोटे अच्छी ताल तार all directions are isotropic. All directions are optic axis. तो सेट में isotropic तमे को कोन there are infinite number of optic axis. there are infinite number of optic axis अच्छी. But in case of anisotropic mineral on the basis of optic axis we can classify it into two types. One is uniaxial, another is biaxial. Uniaxial mineral out of biaxial mineral. So uniaxial mineral it has one optic axis. It has one optic axis, and biaxial mineral they have two optic axis. Uniaxial ले कौन था? गोटे optic axis था. Biaxial ले दीटा optic axis था. So uniaxial, tetragonal, hexagonal, uniaxial, orthorhombic, monoclinic, triclinic, biaxial. तो तुम एमती मन रखियो आइसोट्रोपिक, यूनिएक्सियल, बायएक्सियल। आइसोट्रोपिक रे सब जाक समान एक्सिस, यूनिएक्सियल रे दीटा समान हबो, बायएक्सियल रे नो इक्वल एक्सिस, सब जाक अनइक्वल एक्सिस। बायएक्सियल रे सब जाक कोन अनइक्वल एक्सिस। Uniaxial case रे the optic axis it coincides with the C crystallographic axis. एटा का साथ coincide करे? C crystallography axis साथ coincide करे. But in case of biaxial it doesn't coincide with any of the axis. ये कौन सी axis साथ coincide करे नहीं. जब हम uniaxial के case रे देखिबा ताले it will be C axis. But in case of biaxial it will not coincide with any of them. तो एटा में यूनिएक्सियल हिसाब से कंसीडर करछंती ताले तो सी एक्सिस सॉरी हमारा यूनिएक्सियल केस रही जीवो दिस विल बी सी एक्सिस सो इफ यू insert or if you enter any ray in this direction it will behave like isotropic से कौन behave करियो isotropic बड़ा behave करियो तार गोटे डायरेक्शन छाड़ा all other directions are anisotropic in case of biaxial you will have two direction but it will not coincide with any of the crystallographic axis. So they can be like this, can be like this. So depending upon the mineral, this angle will vary. Angle टा 2V angle को आ जाए. So को mineral को नहीं कि तुम्हें study करचो by axial ला, ता आंसर ता 2V angle vary करें. But they will not coincide with the crystallographic axis. But here it will coincide with the crystallographic axis. एटा तार हमारा tetragonal system रोइला ना. So this one is your C axis. एटा C axis रोची. This one A1 A2. So this C axis it is the optic axis. तमे लाइट यदि एपटे एंटर करेबो ताले
इट विल बिहेव लाइक आइसोट्रोपिक। तो से सी एक्सिस को परपेंडिकुलर हम कौन नहीं बासाल सेक्शन नहीं। तो मैं इटू गोटे स्लाइस नब बासाल सेक्शन इट विल डिमिनिश द ऑप्टिक एक्सिस डायरेक्शन। तो एटा होची तुमरो सी डायरेक्शन व्हिच इज अनइक्वल फ्रॉम A1 एंड A2। एटा A1 A2 ठु कोन हबो अनइक्वल हबो। तो तमे बासाल सेक्शन नउछ तले एटा को बडा बिहेव करिवो आइसोट्रोपिक बडा बिहेव करिवो। कोन पे आइसोट्रोपिक बडा बिहेव करिवो कारण ए जो सेक्शन टा रहइबो इट हैज इक्वल वाइब्रेशन बुझ पाछ। तो एटा हमर हैला सी एक्सिस हला दिस इज आवर सी एक्सिस जतला हम एटू कट करूछंती ताले एलोंग सी एक्सिस जीवो की ऑप्टिक एक्सिस। सो ऑप्टिक एक्सिस जतरे एलोंग सी एक्सिस जाउची तुमे जतले कट करूछ इट विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द सी डायरेक्शन। सी डायरेक्शन टा होची एक्चुअली कोन अनइक्वल देन A1 A2। तो सी ही तुमरो अनइक्वालिटी टा मेंटेन करे। जदि इटी तुमे कट करूछ ताले द सी एक्सिस विल डिमिनिश and the vibration direction will be only on the basal plane। कहा पर हबो basal plane हबो and basal plane होची जेहेतु A1 equal to A2 तो से डायरेक्शन सेठी कोन इक्वल वाइब्रेशन देखियो। तो सी को यदि पैरेलल आमे कट करबा ताले ए बडा जो सेक्शन ना बारिबो एटा होची प्रिंसिपल सेक्शन। हमरे जे कोन टेट्रागोनल हो कि हेक्सागोनल सिस्टम हो सब एटा हबो ऑप्टिक एक्सिस दिस हबो ऑप्टिक एक्सिस। बट इन केस ऑफ तुम्हारा सब धर ऑर्थोरोपिक सिस्टम देखिए हमें ताले डिफरेंट हम कि कोनोसी भी डायरेक्शन है दे विल मेक एन एंगल विथ ईच अदर है ना टू बी एंगल जोटा आसी। किंतु एठी तुम्हारा कोनोसी सेक्शन एमती आइसोट्रोपिक कंडीशन आसीबनी केन एटा सब जाक अनइक्वल अछि है ना। जदि हमर एटा हेगला यूनिएक्सल बायएक्सल केस रे तो टू भी एंगल 0 ले एटा यूनिएक्सल हे जिवो। तो यूनिएक्सल हे गेले तार गोटे सेक्शन गोटे कंडीशन आइसोट्रोपिक आसीबो। सर ऑप्टिक एक्सिस बडा बिहेव करिवो हैला बट तार अदर डायरेक्शन ता रहि जिवो ना। यदि हमें यदि पैरेलल कोन एक्सिस ले एटू तू एमती कट कलु एटा सी एक्सिस को पैरेलल गला तो पैरेलल गले तुमरो सेही गोटे डायरेक्शन तार वाइब्रेशन होच कोन ऑप्टिक एक्सिस हला तो अदर डायरेक्शन गुरा कोन हबो किम सबरा पैरेलल हबो एक्सिस पे हां तो एटा गोटे एक्सिस अछि ते हम लाइट टाइम में पैरेलल करिया कट करिया जो कट हां तू सेही गोटे डायरेक्शन ने खाली एमती पैरेलल लेला हबा तू पुनी डायरेक्शन चेंज कर परिबु ना। जेता डायरेक्शन चेंज करिवु तो एटी अनइक्वल वाइब्रेशन देखियो हला कि तुमे भाबु छ कि लाइट जतले मूव करची जो सेक्शन नि आउची एटा जदि एमती हला मोर तो सब लाइट एमती जीवो माने सब जाक ऑप्टिक एक्सिस को पैरेलल हबो सेमती कोन जाय हमर अदर डायरेक्शन भी तादरे एंटर करि परिबि। किंतु जदि एबला सेक्शन अछि स्क्वायर तू जे कोनोची डायरेक्शन एंटर करले रे जतले वाइब्रेट करियो माने तार जो दुईटा भारियो सबले इक्वल भारियो। तो प्रिंसिपल सेक्शन नले कि तुमरो कि ओब्लिक सेक्शन हो हला मीटर कट सेक्शन एबला सब सेक्शन नहीं करन। तो हमें बासाल सेक्शन ऑफ आइस तुमरो टेट्रागोनल और हेक्सागोनल कोन कोन आइसोमेट्रिक बा आइसोट्रोपिक कोन